Good morning, students. So next topic is how does lightning strikes the building and how to protect buildings from lightning safety, do's and don'ts, and what are the useful effects of lightning. So dear students, you know how the lightning strikes the building. The clouds is already we already discussed in the last lecture. The clouds are already charged. They have high magnitude of electric positive charge and electronegative charge. Now during a moist atmosphere, during a humid atmosphere, it acts as a conductor. ये बात समझो. एयर इज अ कोर कंडक्टर. एयर तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, आगे नहीं ले जाती. तो क्लाउड से लेकर बिल्डिंग तक का जो रास्ता है उसमें कौन इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा? ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर. जब बहुत ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होता है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्राउंड से लेकर पूरे आसमान तक, वी कैन से क्लाउड्स तक एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है रेनी सीजन में, मॉनसून में. तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्लाउड्स के इलेक्ट्रॉन को बिल्डिंग तक लेके आ जाएंगे, उसको कहेंगे कंडक्ट करेंगे. इस तरह से बिल्डिंग तक वो लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लाउड स्टार्ट पुशिंग देयर वेट. जो क्लाउड्स के अंदर ऑलरेडी काफी सारा चार्ज आ गया है, वो इलेक्ट्रॉन्स दे आर कमिंग टू द मॉइस्ट एयर. दे आर स्टार्ट पुशिंग देयर वेट टू द मॉइस्ट एयर. दिस फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ कंडक्टिंग पाथ, और इस तरह से कंडक्टिंग पाथ बन जाता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग. When these electrons reach the building, suddenly all the charges in the clouds flows into the building. Thus, lightning strikes with a devastating effect. तो इस तरह से क्लाउड्स के अंदर काफी सारा चार्ज भरा हुआ है. बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग तक वो रास्ता कौन लेके आता है? मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर. दे बिकम अ सॉर्ट ऑफ कंडक्टिंग पाथ. वो एक रास्ता बन जाता है. जैसे कि आपको करंट लगने के लिए बीच में क्या चाहिए? एक स्टील का रॉड चाहिए. किसी चीज में करंट चल रहा है, आप टच करोगे तो लगेगा. दूर होगे तो क्या होगा? आपको और उस इलेक्ट्रिक करंट जिसमें चल रहा है उसको बीच में अगर आप मेटल लगा दो, है ना, या पानी लगा दो, तो वहां से आप तक करंट आ जाएगा. सेम वे क्लाउड से बिल्डिंग तक का जो रास्ता है वो कौन कनेक्ट कर रहा है? मॉइस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स, we can say moist air. In this way, all the charge from the cloud suddenly forms a lightning and strike the building, which it can become a devastating effect. बहुत ही dangerous effect हो सकती है. But how to protect a building from lightning? Very easy concept. So एक lightning का conducting material होता है, copper जैसा, एक बड़ा सा एंटीना जैसा. It can be sharp with many ends or single end. तो कॉपर का एंटीना we can say बिल्डिंग के ऊपर लगा दो, और वो रॉड को वायर से लपेट के ग्राउंड में एक रॉड लगा दो. तो एक रॉड ग्राउंड में डिप कर दो, एक रॉड को बाहर शार्प पॉइंट से बिल्डिंग के टेरेस पे लगा दो, और वो दोनों पॉइंट्स को कॉपर वायर से जोड़ दो. तो पूरा जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वो पूरा चले जाएगा अर्थ में, ग्राउंडिंग हो जाएगा, जिसको अर्थिंग कहेंगे. इस तरह से बिल्डिंग बच सकती है, उस पर लाइटनिंग की इफेक्ट होगी नहीं, बिकॉज सारा चार्ज डिस्चार्ज होएगा अर्थ में. सो हाउ टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग? अ गुड लाइटनिंग कंडक्टर. लाइटनिंग को जो कंडक्ट कर सके वैसा टाइप का कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर रॉड at one end of which are provided sharp copper points. और उसके काफी सारे sharp points हो सकते हैं. Fine. Its lower end is connected to thick copper strip which runs along the height of the building. और एक rod होगा, उसके अपर साइड पे काफी सारे 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, और इसके साइड पे कॉपर स्ट्रिप होगी, वो बिल्डिंग के नीचे तक जाएगी, ग्राउंड तक. Along the lower end of this copper strip is attached to a flat copper plate buried deep inside the earth. तो एक रॉड होगा जो अर्थ के अंदर डीप बरीड कर दिया हुआ है, उसको कॉपर स्ट्रिप से जॉइन कर दिया. वो कॉपर स्ट्रिप पूरे बिल्डिंग के टेरेस से जाएगी, और वो स्ट्रिप दूसरे कॉपर के थ्री एंड से जॉइन होगी. इस तरह से काफी सारे पेन से ये बिल्डिंग के साथ और ग्राउंड के अंदर इस तरह से डीप किया होगा. तो पूरा जो चार्ज होगा क्लाउड से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज आ रहा है वो चला जाएगा अर्थ में. इस तरह से लाइटनिंग से बच सकते हो. नाउ लाइटनिंग सेफ्टी. व्हाट आर द सेफ्टी? वी कैन से प्रिकॉशंस while during a lightning or thunder. Don't go to any open space during lightning or thunder.
So it's quite whenever there is a monsoon, it is quite good at we can say atmosphere. We feel like to go out, but please, student, if there is a thunder and lightning, don't go in the open ground, open field. A house or building is a safe place. House and building are safe place. Although lightning strike होती है building पे और इस house पे भी, but उसमें हमारे पास होना चाहिए lightning conductor. बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में ऐसा लाइटिंग कंडक्टर होता है जो टेरेस से लेकर अर्थ तक ग्राउंड करते हैं, जिसको बोलते हैं अर्थिंग किया होता है. उन्होंने अर्थिंग किया होता है, तो ऊपर टेरेस पे रखा होता है, यू कैन से कॉपर प्लेट्स का या मेटल प्लेट का, और उस वायर को डाल देते हैं अर्थ पे, और अर्थ के अंदर वो एक रॉड को डाल के डीप कर देते हैं ताकि पूरा जो चार्ज हो वो डीप चले जाए अर्थ में. सो हाउस एंड बिल्डिंग आर ओनली सेफ इफ प्रोवाइडेड विद द लाइटिंग कंडक्टर. If you are traveling in a car or bus, you are safe inside provided the doors of the vehicles are shut or closed. तो बस या कार के विंडोज क्लोज है तो आप कार में भी सेफ हो. कार का पूरा केज जो है उसकी टायर की वजह से नहीं कि लाइट में रहेगी, उसका जो मेटल का केज है वो पूरा चार्ज को अर्थ में डाल देगा. कार इज कनेक्टेड टू द अर्थ, और वो मेटल की जो फ्रेम है वी कैन से कार की, वो पूरी वो लाइटिंग अगर स्ट्राइक हो गई, लाइटिंग अगर स्ट्राइक हो गई कार पे, तो पूरा चले जाएगा ग्राउंड में, इफेक्ट नहीं आने जाएगी. वो पूरा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है लाइटिंग का वो चले जाएगा ग्राउंड. इस तरह से यू आर सेफ विद द कार, बट यू कीप योर हैंड्स इन योर लैप. डोंट टच एनी बॉर्डर्स नॉर्मली if it is of metal, please don't touch. So during a lightning thunder inside a car also you can just keep your hands on your lap. Do's and don'ts. Only closed vehicles are safe. Okay, open vehicles are not safe, closed vehicles are safe. Open field, tall trees, buildings, umbrellas invite lightning. Lightning के टाइम पे umbrella लेके बाहर मत जाया करो. Okay, open fields, tall trees, buildings ये सब invite करता है इसको lightning को. It is better to crouch in, better to take shelter under small tree. बड़े-बड़े ट्री के बजाय छोटे ट्री के नीचे शेड में शेल्टर लेना पसंद करो. It is better to crouch in open. Crouch मतलब खुद को बैठ जाना और बहुत ही कम स्पेस में खुद को crouch कर लेना. Fold your we can say body and in a small area. अगर open field में हो by chance, then you can crouch yourself in a small area. हमारे बॉडी को ना बड़ा सा नहीं, स्मॉल एरिया में कंसंट्रेट करना है, तो आजू-बाजू जो बड़ी चीज होगी, ट्रीज होगी, बिल्डिंग होगी, उस पे ज्यादा फोकस करेगी लाइटिंग. So we have to crouch ourselves, sit down and crouch ourselves in a small area. Shut off all the electronics items, refrigerators, any electronics items which are there. So during lighting is a safe precaution to shut off the electronics. Useful effects of lighting. A plate is has been we can say seen that it plays a major role in evolution. It is there by some researchers and forms nitrogen dioxide gas. So dear student, there is a nitrogen atmosphere. It is quite stable. It does not react with oxygen normally. But during a lightning, that nitrogen N2 molecule gets converted into N molecules, nitrogen atom, and two nitrogen atoms. And these nitrogen atoms react with oxygen to form nitrogen dioxide gas. And this forms acid rain. Well, although acid rain is having bad effect, also there is a good effect that nitrates goes inside the ground and the form of rain. नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है वो जमीन में कैसे जाता है? ऑक्सीजन का हमको पता है ऑक्सीजन साइकिल, बट हवा का जो नाइट्रोजन है वो जमीन में जाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन टू गेट द नाइट्रोजन इन द सॉइल. So the nitrogen fixation bacteria convert into nitrates and the soil plants can absorb. So but all the trees are absorbing nitrogen from the ground. So there will be shortage of nitrogen. But during we can say lightning, this nitrogen gets split into nitrogen dioxide. This split into nitrogen which react with oxygen from nitrogen dioxide and react with moisture. It fall as acid rain. Although acid rain is harmful, but this sometimes is also useful for the ground to get nutrients. By nitrogen fixing bacteria. So in this way nitrogen is obtained or we can say reach the ground from the atmosphere, which is a good way to get nitrogen from the atmosphere. Lightning forms ozone layer. So dear student, we know that ozone protects us from UV rays. So how ozone is formed? So oxygen during lightning, this oxygen split into oxygen atoms
Normally it is not forming, but during a lightning, this oxygen split into oxygen. Now this will react with other oxygen molecule because it is highly reactive and it forms ozone layer. Now when UV rays fall on ozone layers, it reflect back in the space. So when UV rays falls on O2, it gets split, and if even in lightning, this oxygen gets split into oxygen atoms, and this oxygen atom reacts with another oxygen gas and forms O3 molecule. Now whenever UV rays fall on this O3, it will reflect back in the space. So during lightning, ozone molecules can be formed, which is a good way. So these are some good effect of lightning, although it is having a major devastating effect. It is not good. Lightning is not actually good, but there is, as it is a natural phenomenon, so it is there for a specific role in the atmosphere. Somehow it is helping the ecosystem. So this was about the lightning, and if you want notes, you can take screenshot, and if any query, you can ask me later.